Assalamu alaikum guys. Welcome to the stream. आज स्ट्रीम 2 मिनट लेट शुरू हो गई. टोनी एफएन एओए वालेकुम अस्सलाम यार, कैसे हो आप? नाइट का मन नहीं चल रहा. टिकटॉक ना, दोनों पे नहीं आ रहा. कुछ भी नहीं आ रहा, बस स्पैम ना कर रहा. ओ एपिक आया है, एपिक आया है टोनी. वेट व्हाट? एपिक वर्क नाइस. यप. यार वेट वेट वेट, मुझे समझ आ गई है. यार एपिक हमने काफी देर पहले का डाला हुआ है. मुझे लगता है ये कुछ दिन लगते हैं ये काम करने में ना. मुझे लगता है टिकटॉक वाला भी काम कर जाएगा और बाकी भी. ये सही है. दिस सॉन्ग राइट नाउ इज नॉट कॉपीराइट. हाँ, ये अभी मैंने जो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है उससे लगाया है. तो अभी स्ट्रीम्स इसी में से, उसी की प्लेलिस्ट में से सारे लगेंगे. तो देखते हैं कि क्या सीन होता है. ये टोनी, टिकटॉक के अलावा एक और भी हमने बनाया था. वो कौन सा था? वो वाला भी ट्राई कर ले, हो सकता है वो काम कर जाए. कमांड. डोंट रिमेंबर. वेट, मैं चेक कर लेता हूँ, शायद मुझे पता हो. um, hmm, शॉर्ट्स. टोनी, एक्सक्लेमेशन मार्क शॉर्ट्स है. अच्छा, मैं करता हूँ.
ओए वेट, एपिक ने नेक्स्ट एफएनसीएस अनाउंस कर दिया टोनी। ये तो खबर देखने वाली है बॉयज। ओए शॉर्ट्स का भी है, शॉर्ट्स का भी काम कर गया है। नाइस। यार मुझे समझ लग गया है टोनी, मुझे समझ लग गया है, काम कर रहे हैं सारे। जो टिकटॉक वाला है ना, उसके अंदर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं डाला था, तूने कहा था एक्सक्लेमेशन के ना एक बगैर भी ट्राई कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वजह से टिकटॉक वाला नहीं कर रहा, वो मैं चेंज कर देता हूँ, एक्सक्लेमेशन के साथ कर देता हूँ उसे। वो भी फिर ये सीन डन हो जाएगा। यार अभी 2-3 व्यूअर्स होते हैं तो वो एफएनसीएस वाली वीडियो देखते हैं यार। तू भी ना देखी टोनी अभी। तू वो डेल कर और क्वेश्चन लगा दे। हाँ मैं लगा देता हूँ, बल्कि वेट अभी लगा देता हूँ मैं। कॉपीराइट पर जाए शायद, बल्कि नहीं पड़ता। देख विड साथ। ओए हाँ बल्कि ये ओए ये कंफर्म कर दे मुझे टोनी, ये कॉपीराइट पे ना चली जाए ओजी की वीडियो। और बाय द वे मैंने टिकटॉक वाला डाल दिया है कमांड, लेकिन मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट स्ट्रीम से ही आएगा ना, या अभी भी ट्राई कर ले एक बार। नहीं पड़ेगा यार, प्रोबेबली वाली बात ना कर, पड़ गया तो गलत काम हो जाएगा। और सेकंड थिंग पर भी जाए तो खैर है। क्या मतलब सेकंड थिंग पर भी जाए, कौन सी सेकंड थिंग? यार टोनी इतनी डेड स्ट्रीम है, 12 मिनट हो गए हैं, किसी को बुला यार। क्या कर रहा तू? कोई नहीं आ रहा लुनाटिक का पेपर। यार उसके भी कल तो पेपर खत्म हुए हैं। उसका कल रिजल्ट है पेपर का, आज उसका फिर वो है। रॉक्सर एंड जेवियन ट्यूशन, मिथिक नॉट रिप्लाइंग। वो एनिमे वीप किधर है? रफ गेमर किधर है यार? रफ गेमर का यार डिस्कॉर्ड ले ले यार, उसको बुला लिया कर। वो आएगा ना दोबारा, उससे डिस्कॉर्ड ले ली। और एनिमे वीप का क्या हिसाब है? और एनिमे वीप इज आउट ऑफ होम। यार वॉक करके आता 30 मिनट्स बाय सेंडर। अच्छा जेंडर ने कहा वॉक करके आता 30 मिनट्स, चलो वो तो आ जाएगा यार। जेंडर यार अपना जानी है यार ऐसे मामलों में। वो क्रिंज, वो जितनी मर्जी बड़ी क्रिंज चीज़ होना यार, लेकिन ऐसी चीज़ों में यार वो बंदा स्पोर्टिव है यार, इसमें कोई बंदा आर्ग्यू नहीं कर सकता। उस बंदे के पास कोई काम हो, कुछ भी हो ना, वो टाइम निकाल के आ जाता है आपके लिए। टोनी तो अभी किसी गेम के मैच में तो नहीं है तो बता मुझे। अगर नहीं है तो एफएनसीएस वाली देखते हैं यार। यार मैं कहता हूँ अगर वो है ना सीन, अगर डुओ एफएनसीएस हुआ, यार मैं कहता हूँ यार ग्राइंड स्टार्ट कर दे टोनी ऑन स्ट्रीम। व्हाट यू से, व्हाट यू से माय फ्रेंड? सोलो हुआ तो फक ऑफ।
चल लगा दे वेट। अच्छा मैं लगा रहा हूँ। वेट कर। Put me on a pedestal and tell me I'm the best. अच्छा यार बैकग्राउंड म्यूजिक मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ जरा। यार ये देख, visual audio gets huge buff, Epic announces new FNCS. G'day mates, welcome back to my YouTube अच्छा channel. आवाज सही आ रही है वीडियो की? मुझे बता दो। G'day mate. यार रोजी एंटेक्स शेव में कितना कितना केक लगता है। हाँ टोनी बता, आवाज सही आ रही है? Welcome back to my YouTube channel. In today's video, I want to talk about the huge buff the visualized audio just got in Fortnite. If you are not using visual audio, I guarantee after this video you will. This is one of the biggest buffs we've seen a setting get in quite a while, and I just don't think enough people are talking about it. I also want to talk about the huge announcement we just got from Epic Games about what the next competitive season is going to be, what is the FNCS going to be, and what is in store for competitive in 2022, along with the new Community Cup, which is going to be going on during the Grand Royale, and what this hype hour show is that Epic has been hyping up. There's a lot to talk about. Let's just jump into it. Just quickly, before we jump into today's video, I want to give a huge shout out to today's sponsor, G2A. I've worked with them for a while now. You guys absolutely love them, but in case you haven't heard about them, G2A.com is an online marketplace where you यार can buy मुझे almost समझ नहीं anything you आती can think of. एक बात है, इसने अब अभी इस वीडियो में आधी वाली शर्ट पहनी हुई है और उसी वक्त अब दूसरी इसके सीन में इसने हुडी पहनी हुई है। लाइक ब्रा। So much. Like, I used to be very much in the camp that visual audio was worse than having visual audio off, but now with this most recent change, I'm going to be trying this out over the next few days, and I have a feeling that visual audio is going to be what every pro is using now. And let me talk about what this change is, but first, in case you don't know what I'm talking about, visual audio is just a setting that you can turn on so you can see where shots are coming from on your screen. It was meant to be for deaf people and people who have audio impairments, but a whole bunch of players started getting involved, especially console players, because audio is so terrible on console, and started using it despite having good hearing. But a lot of people didn't realize exactly how visual audio worked and how it affected the rest of your audio. I've made whole videos on this, but to summarize it very quickly, there is three main downsides to visual audio. First one is just the screen cluttering. This पीसी क्रैश्ड सॉ नथिंग आरआईपी क्या है एफएनसीएस। यार अभी तक उसने एफएनसीएस का कुछ नहीं बताया, वो विजुअल ऑडियो बफ का ही बता रहा है। अभी उसने वो भी नहीं whole bunch of पैसे stuff on बताया। your screen. A lot of आवाज people वगैरह tell me सही to आ get रही है? used to it, and unless you're in endgame where there's just stuff happening everywhere, it can actually be quite helpful. In a normal fight, there isn't that much going on, and it is still pretty clear. So that's like one negative, but I could see why that's not too bad. The second one is FPS drops and lower FPS. It depends. It does still decrease your FPS. It hasn't changed that at all, but a lot of people willing to forego 5, 10 FPS, whatever it is, to be able to have that extra information. But the last one, and by far the biggest downside to visual audio that people don't seem to understand, is as soon as you turn visual audio on, your audio used to go from being stereo to mono channel. I've explained what that means in the past, but basically you lose all directional audio. Everything हाँ comes into your परफेक्ट headphones सही है। as mono, which means you don't know where anything is. If someone's shooting in front of you, it sounds like they're in front of you, behind you, left of you, right of you. There is no audio cue because the visual audio is supposed to tell you direction. So if you're someone who had able hearing, you didn't have any issues or disabilities, and you had good headphones, being able to see where the shots were coming from but losing all that information on hearing was quite a big negative, especially in endgame, because hearing there's shots in every direction but not knowing which ones were close to you and which ones were an issue was why I thought visual audio was so bad. But Epic has now changed that. They made a tweet saying,
Visual, we've updated the visualized audio ना settings so अभी you can तक 2 both viewers hear है, the मुझे direction पता the नहीं sound is दूसरा coming viewer from, कौन है, लेकिन 2 viewers हैं अभी तक. as well as see the direction with the indicator. This is huge. So now with visual audio ticked on, you don't lose any sound quality whatsoever. It is the exact same sound quality. It is now stereo. So if a shot comes from the right, you'll hear in your right headphone. If it comes from the left, you hear in the left headphone. So you now have all that same information, plus you have the added information of the visual audio cues. This is massive because you guys know there are huge benefits to having visualized audio on. You can hear shots and hear footsteps further away. You can hear vehicles like from Narnia. Like for some reason, you can just see vehicles show up on visualized audio when they are so incredibly far away. You know when people are popping meds, if they're popping something like a med kit or a bandage, something really quiet you can't normally hear, visualized audio would tell you. There was a lot of benefits to visualized audio before, but that one downside of losing directional audio is why I always said you should not have it on, and it's the one reason why so many pros didn't use it. But now having the ability to turn it on and still maintain all that audio, it is going to be incredibly strong now. Endgame is still going to be incredibly cluttered, and maybe those FPS drops and the lag it causes, which I don't think is honestly that much. Maybe it's worse in endgame, so I don't know if every single pro is going to start using it, because obviously endgame is the most important time where a pro needs to have their screen clear and need to know what's going on. You'll still see a lot of console pros use it, and console pros who've come to PC use it, and they don't seem to have a problem with it. So I don't know, maybe it already was worth using, but I always argue that those downsides massively outweigh the benefits. But now with this change, I've been giving it a go in pubs and arena, and for early and mid game fights, it's pretty insane. Like I think give it a try. If you've already been using visualized audio, you'll instantly notice that it is way better now. If you haven't been using it, give it a go, because not enough people are talking about this. This could be a massive change. I'm talking like performance level change to pros. The amount of information you gain in early and mid game fights is insane. Let's talk about all the information we just got in Epic's most recent competitive blog post, including them talking about potentially what the next FNCS game mode is. So if you guys didn't see it, we got a breakdown of last FNCS. We also got the dates for the upcoming Grand Royale. It starts on November 11th to 13th for Middle East. All the other regions start on the 12th. So this is a little over a week away. Like this is coming around so quick. I already made a whole video talking about the Grand Royale format, how you qualify through, how it all works. I'll link that in the description down below if you want to go give that a watch. But they did give a brief run through of that. We also got to know about what those extra activities are. If you guys missed it in the original Grand Royale blog post, they said that even though you couldn't qualify for the Grand Royale by playing in the week of the Grand Royale, you had to already qualify by getting into a set lobby final of one of the And another, wait, कर ले try, cause healing और cars वाली बात बहुत बड़ा fact है. And another OP thing is when you crouch move, it's hard to hear. हाँ यार, वैसे ये बात तो है, लेकिन वही वो जो उसका एक डाउन साइड बता रहा था ना, वो भी अब चलेगी तो करना पड़ेगा ट्राई. ऑसम एंटरटेनमेंट यो बॉय, यार कैसे हो यार, पाब्लो यार कैसे हो, वेलकम टू द स्ट्रीम यार. आज बड़ी डेड स्ट्रीम जा रही थी, 20 मिनट हो गया, कोई तो आया. Tony FN, but visual sound effect is OP for that. Mm-hmm. Awesome entertainment sub bot. Yep. कैसे हो यार पाब्लो? पाब्लो मुझे लगता है the आके most चला भी recent गया. FNCSs, there was going to be extra activities. We found out what that is. I mean, I don't want to say unfortunately, I was hoping for a little bit more. It's a skin cup. It's the Victor Elite outfit in the Community Cup. It says get into the FNCS Grand Royale spirit by competing in the Community Cup on November 16th for the NA East, NA West, and Brazil regions, and November 17th for OC Asia and Middle East and Europe servers. So don't really know why they're putting them on different days. That's really confusing. Like I'm used to things being on a different date for OC to the rest of the world because of the obviously the time difference, but it's still technically on the 17th. Like they say tournaments on the 17th, it's on the 17th in your time zone. But this one's actually on different days. If you guys are smarter than me, let me know in the comment section down below what that might be. I don't know why they might be doing that, but it's going to be a trios event. It's going to be 10 matches across 3 hours, and obviously if you replace in a certain high amount, you get the skin. It's your normal skin cup. I'm a little bit disappointed when I saw there was going to be extra activities. I was hoping for like a winter royale, or at least maybe I just thought of a tournament with prize money. I thought they could maybe even do something cool like they did recently with the All-Star Showdown, maybe like edit courses or aim courses, or do something cool. But I mean, it's a skin cup. I don't want to be that guy and be a bit negative, and it's $5 million tournament for pros, so you know me doing viewing parties. I'm vibing, I'm excited. The Community Cup probably wouldn't have even fit into my schedule, but just for you guys who can't qualify for the finals, I feel like just some kind of a tournament.
ब्रो ये एफएनसीएस यार, ये एफएनसीएस की वो बात नहीं कर रहा, ये तो उसने बीच में बताया यार कि ये ग्रैंड एफएनसीएस होना है, ग्रैंड रॉयल। लेकिन उसके अलावा उसने कहा है कि नेक्स्ट एफएनसीएस का उसने with बताया, big उसने money, वो or at भी least कहा a है। little bit of अभी money, would have बताएगा। been cool. I don't know. Let me know. Maybe you guys disagree. You're excited for the skin cup. We'll see. We have had not that many skin cups for a while, and I know a lot of you guys who are more casual really enjoy them. So maybe that's just me. But we also got the announcement on what the next game mode might be. So we ये got to देख। learn about the Hype Hour show. We've never had this before, so tune in on Friday, November 19th for the Hype Hour, our first broadcast show that will recap our entire year, run interviews with players, provide analysis from your favorite casters, and include a brief announcement regarding Fortnite competitive in 2022. You are not going to want to miss this. That is crazy. So I'm going to guess that is what the next competitive game mode is. We get to वाओ। find out what the plan is for वाओ। competitive in 2022, and we get to find out वाओ। mid Grand Royale. I was telling you guys in my video. ब्रा, ये बंदा अपने टाइटल में लिखता है एपिक अनाउंसेस नेक्स्ट एफएनसीएस, और फिर ये हमें सिर्फ एपिक का एक छोटा सा 3 लाइनों का पैराग्राफ दिखा रहा है जिसमें एपिक ने कहा है 22 नवंबर को हम बताएंगे। वाओ। फक यू ऑजी एंटिक्स, वेट रुको जरा, रुको जरा, सबर करो, They're डिसलाइक probably going करने to दो। announce what the next game mode is at the अब end of सही है। NA West on. ये क्या क्या नोब है यार ये बंदा। चलो भाई इस गेम पे ही चलते हैं, ये हमारी जिंदगी का टाइम ही वेस्ट हुआ है बस। यार पाब्लो अभी तक है चैट में कि क्या सीन है? पाब्लो इधर ही हो? मुझे तो फिर दिख तो रहे हैं। पाब्लो हाई बॉयज कह के तो निकल गया। Awesome entertainment still here, तो बोल क्यों नहीं रहा? Pablo, why you not talking to us, bro? यार ये आज की क्या डेट स्ट्रीम है, नो जोक। कि बंदे शंदे हैं यार, मजा है। That is fucking exclamation mark TikTok, पता नहीं कितना फनी लगा है इकट्ठे। थोड़ी लेट गेम खेलने का आज दिल कर रहा है, मुझे पता ही नहीं मेरे 9000 पॉइंट्स हो गए हैं। यार टिकटॉक वाला मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट स्ट्रीम में ही होगा क्योंकि अभी चेंज किया है ना। लेकिन हो जाएगा क्योंकि बाकी दोनों चल पड़े हैं, तो ये भी लाजमी सी बात है चल पड़ेगा। वाह पाब्लो भी चला गया यार। धने, इट्स यू एंड मी नाउ। यार टोनी
कोई बंदा कर नहीं, नो जोक यार। ना मुझे मुझे यार पता था यार कोई ना कोई ऐसा दिन तो जरूर आएगा ना, लाइक जितने भी बंदे सारे अभी इतने हमारे व्यूअर्स नहीं है ना, कोई 4-5 ही होते हैं एट मैक्सिमम। तो ऐसा दिन होगा कि मतलब कोई कभी घर नहीं होगा। ब्रो व्हाट द फक, ये क्या टेक्सचर्स है यार। मैंने इतने ज्यादा डिले पे लेट गेम लगा लिया, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। ब्रा ब्रा यार तू किस दिन बता रहा था डुओ कप है? वेट मैं चेक ही कर लेता हूँ। सर डुओ साहिब कप एक दिन में है ये। अच्छा लेट गेम सोलोस, um ignore that real quick। अच्छा लेट गेम्स सैटरडे को है, लेट गेम कब भी कर लेंगे। वेट व्हाट, ये कल है, टुडे संडे, ब्रा। अच्छा सही सही सही, मैं अपने विजुअल्स ऑन करूँ यार।